Good morning, students. Up to last class, we have discussed the transportation in plants, and we have seen there are two kind of the conducting tissues are present in case of the plants: xylem and phloem. Xylem responsible for transportation of water and minerals. You can say accent of shape. Second one, transportation of the food and food transport through the phloem. Phloem is responsible for transportation of food. Now we are going to discuss today transportation in animals. You know well, animals may be small sized, variety of the size of the animals, may be small sized, may be too much bigger, like the elephant, blue whales. So how the transportation take place in various kind of the animals, try to understand. The animals may be, the body of animals may be made up of single cell. Such kind of animals are known as unicellular animals. The unicellular animals, these are the simplest animal because their body made up of single cell only. You know well, example, this one, yes. This figure is of which animal? Do you know? This is the amoeba. Yes. This is the figure of which animal? Yes. Now, can you tell me? This one is the paramecium. Amoeba, paramecium, these are the unicellular animals. In such kind of the animals, water continuously enter from outside. Water continuously enter from outside. This water carry oxygen. This water carry also oxygen. This oxygen utilized by the plant animal for their metabolic activities and to perform various activities in their body. And excretory waste, when this water enter, अगर एंटर होता रहेगा तो एनिमल की साइज बड़ी हो जाएगी ना बच्चों, फूल जाएगी. लेकिन ऐसा तो नहीं होता. क्या होता है? साइज तो मेंटेन रहती है. साइज कैसे मेंटेन रहती है? बाहर से पानी अंदर आएगा, अंदर से बाहर भी जाता रहेगा. और जब अंदर से बाहर भी जाता रहे तो इन दिस वे द साइज ऑफ एनिमल मेंटेन. तो यहां से एक्सेस ऑफ वाटर कंटिन्यूसली गोज आउट. व्हेन द वाटर विच इज गोज आउट फ्रॉम द बॉडी, इट ऑल्सो कैरी द वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन देयर बॉडी. जो इनके एनिमल्स की अंदर जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, इन सबको ये एक्सक्रीटरी वेस्ट, दीज मटेरियल डिजोल्व फ्रॉम दी गोज आउट फ्रॉम दी बॉडी. बॉडी से बाहर कंटिन्यू जाते रहेंगे. इन दी सेम वे इन केस ऑफ द पैरामीशियम. इन दी सेम वे इन केस ऑफ द पैरामीशियम, पानी बाहर से अंदर आता रहेगा और अंदर से बाहर जाता रहेगा. पानी का बाहर से अंदर आना बाय फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ज्यादा से कम की तरफ. विच वन दिस प्रोसेस? बाय सिंपल डिफ्यूजन. This occur through the process of simple diffusion. This occur through the simple diffusion process. In same case, you know well,
पहचानना, देखें क्या किसका फोटो बना रहा हूं। यस, पहचानिए इसे। यस, this is the hydra. This animal is the hydra, and in case of the hydra, these are the tentacles. These are the tentacles. पूरी बॉडी से यहां पर जो वाटर है, सॉरी, यहां पर वाटर बाय सिंपल डिफ्यूजन, एंटर फ्रॉम सिंपल डिफ्यूजन, यहां से वाटर अंदर आता रहेगा। इसी टाइप से हमारे पास में एक और एनिमल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड स्पॉन्जेस। These are sponges. In case of the sponges, there are a number of pores are present in their body, and through these pores, water continuously enter in their body. Water continuously enter in their body. इनकी बॉडी में वाटर आता रहेगा और ये यहां से बाहर चला जाता रहेगा। इन दिस वे, दिस इज ऑल्सो विच प्रोसेस? सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, गॉट इट? सो इन केस ऑफ द लोअर एनिमल्स, the how transportation take place in these animals? By the process of, yes, simple diffusion. Got it? So students, now discuss the transportation in human beings. Transportation in humans. You can say blood circulatory system. याद है हम लोगों ने 5th क्लास में पढ़ा था। There are 3 parts of the blood circulatory system in human beings. Which one? Number 1 is the blood. Second one is the heart, blood, heart, and third one is the blood vessels. Third one is the blood vessels. याद आ गया? Now we will study them one by one. First, we will discuss in detail blood. So look here, blood. The blood consists 2 parts. Blood consists 2 parts. Number 1, blood, liquid part of the blood. The liquid part of the blood is called as blood plasma. The liquid part of the blood is called as blood plasma. And second, organic part, cells part, cellular part, this is known as blood corpuscles. Blood corpuscles. So liquid part, blood plasma, blood corpuscles. The blood plasma produce about 55% part of the blood. It produce 55% part of the blood. It produce rest 45% part of the blood. It form at 55% part. It form 45% part of the blood. Got it? Now the blood plasma consists about 95% water.
कुछ लोग 95 गए थे, कुछ लोग 90% गए थे, तो यहां पर लिख देते हैं 90 to 95% वो रेस्ट 5 to 10%, the rest you can say 10% part or 10% part remain part. There are a number of the materials are present over here. Some are excretory waste, some are excretory waste like urea, uric acid. Some are all the digested food, all the digested food and digested food after digestion, you know well, after digestion the digested food is transported from digestive system, alimentary canal to different part of the body. हर एक सेल को फूड की रिक्वायरमेंट होगी ना बच्चों, तो ये हर सेल तक फूड कहां से कौन सप्लाई करता है? हमारा ब्लड। और ब्लड किस फॉर्म में? इन दी फॉर्म ऑफ ब्लड प्लाज्मा। अब ये डाइजेस्टेड फूड फैटी एसिड्स हो सकते हैं, ग्लूकोज हो सकती है, तभी तो हम कहते हैं ब्लड ग्लूकोज लेवल, अमाइनो एसिड्स में बी अमाइनो एसिड। बच्चों दीज ब्लड ऑल्सो कैरी हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स हमारे डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, दे प्रोड्यूस दी हॉर्मोन्स। गॉट इट? ये सब इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारा ब्लड प्लाज्मा। इन डिजोल्व्ड फॉर्म दे ट्रांसपोर्ट वेरियस मटेरियल। ठीक है, अब मेरे पास में इतनी कुछ बात खत्म होने के बाद में there are some other proteins are also present in the blood plasma which are associated with the coagulation, blood clotting। चोट लगती है, ब्लड क्या बहता ही रहता है क्या? नहीं, एक टाइम के बाद ब्लड बहना रुक जाता है, इट स्टॉप दी ब्लीडिंग एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्लड क्लोटिंग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? ब्लड क्लोटिंग। सो you have learned about 90% part blood plasma, rest 10% part digested food, excretory waste, stored food material, like this. Now blood corpuscles. Blood corpuscles are basically three types. Blood corpuscles are basically three types. Number one, RBCs. RBCs are also known as red blood corpuscles. Red blood corpuscles. These are the red blood corpuscles, RBCs. Second one, WBCs. WBCs, white blood corpuscles. White blood corpuscles. RBCs, WBCs, and third one, platelets. Platelets. RBCs are also known as, because these are red in color, so these are known as erythrocytes. These are known as erythrocytes, the cells which are red in color. Why these are red in color? Due to presence of hemoglobin. Due to presence of hemoglobin. Hemoglobin is a pigment, blood pigment. Due to presence of hemoglobin, the blood is red in color. RBCs are red in color. The main function of hemoglobin is the
transportation of oxygen. The main function of hemoglobin is the transportation of oxygen. So main function of RBC is the transportation of oxygen. यहाँ लिख दो, they are associated with the transportation of oxygen. तो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इज द फंक्शन ऑफ RBCs, other name erythrocytes. WBCs, other name leukocytes. WBCs are colorless. Due to these are colorless, their name leukos. Leukos means colorless, without any color. WBCs. बच्चों, WBCs are main function of the WBCs involvement in the protection against disease. So WBCs provide protection against disease. Provide protection against disease. How WBCs provide protection against disease? ये करती है बच्चों, जर्म्स जैसे हमारे बॉडी में एंटर होते हैं, दे एंगल्फ, खा जाती है, दे एंगल्फ दी जर्म्स, ये जर्म्स को पकड़ करके खा जाती है. इन दिस वे दे आर इन्वॉल्व इनटू दी फेगोसाइटोसिस. इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? फेगोसाइटोसिस. This process is called as phagocytosis. So in the form of phagocytosis, they engulf the germs. They engulf, निगल जाना, खा जाना, the germs, and provide protection to us against disease. Now, blood platelets और प्लेटलेट्स का, जैसे यहां पर हमने कहा, व्हाट इज अदर नेम ऑफ आरबीसी? इरिथ्रोसाइट्स. WBCs ल्यूकोसाइट्स. तो इनका भी तो कोई नाम होना चाहिए. दीज आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. दीज आर नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स. These are known as thrombocytes. Platelets. Platelets, these are associated with the blood coagulation, blood clotting. तो बच्चों, इस ब्लड क्लोटिंग का काम करने का काम, ब्लड क्लोटिंग का काम किसका हो गया? ब्लड को क्लोट कौन करवाएगा? हमारी थ्रोम्बोसाइट्स. Platelets associated with the blood clotting, blood coagulation. बात समझ में आ गई? चोट लगेगी तो हमको हमारी ब्लड क्लॉट इंजुरी होगी, और इंजुरी होगी तो ब्लड ब्लीडिंग होगा, और ब्लीडिंग होगा तो ब्लीडिंग को कौन रोकेगा? प्लेटलेट्स. RBCs, WBCs, platelets provide protection, transportation of oxygen, provide protection against diseases, phagocytosis, blood clotting. ठीक है.